So namaskar all of you. तो हमारा टेस्ट सीरीज रो फर्स्ट टेस्ट रो डिस्कशन टा आज में देखिबा. So first test हमारा OGM 1 code रो, that is your procedural law रो paper टा. So I hope all of you have already given the test. Okay. So first question का आसंदो. तो इधर basically we'll have a discussion. आपण माने जो माने already test दे चंती. If you have added anything else ଆପଣ କିଛି extra ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ, then you can let us know and we can have a discussion. तो एठी 10 marks रो question अछि. तो first मु rules गुडा कहि दउची so that जो माने देखुचंती भी से माने भी view करचंती से माने भी structure टा जानिबे. So हमर एथरे कोन होउछ ना 150 marks आउ 150 minutes रो exam रोच. Okay, 2.5 hours and 150 marks. तो ता माने कोन ना जत्ती की मार्क रो प्रोसीजरल लॉ रे जत्ती की मार्क रो हमर क्वेश्चन दउची हमको बेसिकली सेत्ती की मिनिट नंबर अछि सो दैट हम ताको प्रॉपर्ली कंप्लीट करि परिबा. ओके, प्रॉपर टाइम रे आपण फिनिश करिवे. ठीक अछि. सो ए जिंसडा माइंड रे रखियार अछि. तो एटा 10 मार्क रो क्वेश्चन अछि. आपण 10 रु अधिका मिनिट आपण देबेनी. ओके, 10 मिनिट्स रे आपण को you have to finish the question. So सेटा गोटे most important part. बाकी content आउ केमिति लेखुचंती आपनकर structure of the answer सेटा तापरे important होची. Okay. So सबले दी लाइन रो introduction ओटे देबे. तनु essential conditions related to jurisdiction of civil court. एटा से पचारला explain the essential conditions relating to jurisdiction of civil court. Okay. So 2 lines रो introduction आपण ओटे देख परिबे. जो थरा introduction हमें कौन लिखू, that is very important. तो introduction रे आपनकर गोटे basic definition, okay, technical नुह गोटे working definition type रो रहइबो. Number 1. Second, कौन what is the relevance of the question, importance of the question कौन, ए दीटा point रे introduction रे. Okay, तो सेटा लिखिला परे then a particular question रे से essential conditions पचार. So एथि आपण देखिबे headings और सब headings गुडा बेसी बहुत important जोठी कि हमें point wise लिखुचु आउ हमको marking भी सेमती दरकार. ओके, इंट्रोडक्शन टा केबे भी लिखा होइनी, एटा आपनकर only for your reference लिखा हिच. ओके, कोनोसी जगह रे इंट्रोडक्शन लिखि स्टार्ट करिवे. ए जस्ट गोटे दी लाइन रो गोटे पैराग्राफ स्टार्ट हो तापरे जो सब हेडिंग्स गुडा दिया हिची से गुडा आपण देबे. तो जहा पचार जी सबले मन देखिबे निज मनरू किछि हेडिंग्स दवा दरकार नै. जहा पचारची क्वेश्चन रे से हेडिंग्स ही दियाबो. एठी पचारला एसेंशियल कंडीशंस रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड. मु भी एग्जैक्टली से लिखिली एसेंशियल कंडीशंस relating to jurisdiction of civil courts. Okay, then each type of jurisdiction ऊपर किछि किछि अपन लिखि पर subject matter jurisdiction introduction टा कोथरे भी दिया जीवनी कोथरे ना एसे रे ना आपनकर कोनोसी पार्ट रे भी इंट्रोडक्शन आपण बुझुचंती सेटा इंट्रोडक्शन सेटा लेखा होइनी केबे कि सेटा इंट्रोडक्शन सेम विथ कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कि एसे रे केतना बॉडी ऑफ द एसे भी लेखंदी सेकुडा लेखा होय सेटा आपण बुझिया पे. किंतु तापरे जो आपनकर सब हेडिंग्स गुडा रहउची सेथरे निहाती भाबरे आपनको लेखिया पे पड़े जेंतेडा लेखा हिच एठी. सो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बॉडी सेटा कोठी भी आपण लेखंदी. ओके, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एटा एटा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होला, एटा बॉडी ऑफ द आंसर रहला, एटा कंक्लूजन रहला. ओके, बट तापरे जा से पचारिची तार जो सब हेडिंग्स गुडा सेगुडा निहाती आपण देबे. तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हैला. ओके, आउ देखो मते टोटल 10 मिनिट्स दिया है. तो आपण निजर स्पीड जानि जंती कि ओपीएससी जो टाइप रो खाता दउची 5 मिनिट कि 6 मिनिट रे आपण गोटे पेज कंप्लीट कर परिबे. सो एटा 10 मिनिट्स रे मते लिखियर अछि. इट विल बी लाइक 1.5 पेज कि जे जे बेसिकली 2 पेजेस में तो लिखि परिबे. ओके, 1.5 पेज रो कम होबा कथा न, माने एटा हला नॉर्मली जरो गोटे रेगुलर हैंड राइटिंग अछि, रेगुलर स्पीड रे जने लिखुचंती गोटे A4 साइज पेपर किंबा गोटे ओपीएससी जो टाइप रो रूल्ड पेपर दोची ताको सारिया पई यू विल टेक ओके जनरली 5 to 6 मिनिट्स हला. एटा आपन को बुझिबार अछि. सो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन देखो. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. ओके, सो यू राइट 1 or 2 lines about it.
मोस्ट इंपोर्टेंट है तो तार कंटेंट टा जोटा आपण देबे और तार रेलेवेंट प्रोविजन टा ओके सेक्शन किंबा सीपीसी रे हेले आपण को रूल्स एंड ऑर्डर से गुडा भी आपण को पर्टिकुलरली लिखिया पे पड़िबो ओके काहे कि ना माने आपण जदी खाली कांसेप्ट जानि जंदी धरंतु आ आपण को रूल्स ऑर्डर्स की सेक्शंस मने पड़नी ताले निहाती भाबरे मार्क्स कटिबो ओके आ जो गुडा रेलेवेंट सेतिकी ही लिखिबो ठीक अछि तो सेटा आपण देले subject matter jurisdiction रे okay give the relevant provision section 9 धरंतु एठी रहला तापरे landmark case laws okay so एठी कोन particularly गोटे जिंस देखिबार अछि आपण गोटे पॉइंट लिखुचंती जदि आपण केस लॉ गुडा एमिति प्रिपेयर करचंती कि आपण सबु सब्जेक्ट रो तार पर्टिकुलर सेक्शन वाइज किंबा पर्टिकुलर जो पॉइंट्स गुडा अछि आंसर रो ओके जेमति कि धरंतु एठी आपणकर सीपीसी रे हैला रेस जुडिकाटा क्वेश्चन पड़ले रेस जुडिकाटा रिलेटेड एतिकिटा इंपोर्टेंट केस लॉ अछि ता भितरे भी जदि यू नो जदि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रे एई दीटा केस लॉ अछि आपण एमपी जदि ऑन रखछनी ताले एठी आपण लिखि परिबे ओके मॉडल आंसर रे जेमति देछि एठी कि दुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ओके तो यू कैन जस्ट राइट दैट और से केस रे दीटा ही जिंस लिखिबे गोटे थिला कोन ना इश्यू कोन थिला केस रे ओके आउ गोटे हैला जजमेंट कोन आसिला काहे कि ना देखंतु दीटा टाइप रे हमें परीक्षा रे केस लॉ गुडा लिखु प्रथमे जतले हमें स्वेच्छा रे लिखु माने सेटा क्वेश्चन रे को पचर है जे केस लॉ दियंतु ना ताले यू जस्ट राइट व्हाट आर द इश्यूज ओके इवन फैक्ट्स लिखिया पे भी समय नथे इश्यूज कोन लिखिबे जजमेंट कोन लिखिबे कंक्लूजन टा लिखिबे गोटे गोटे क्वेश्चन रे से पचारिबो आपन को ओके एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट विथ द हेल्प ऑफ केस लॉस सेठी जो फॉर्मेट टा हमें पढुचु ओके एफआईआरएसी फिराफ फॉर्मेट टा आपण सेटा देबे ओके दैट मींस यू स्टार्ट विथ फैक्ट्स इश्यूज rules and regulations applicability in this case and conclusion पांचटी सेगमेंट आपन को दबार अछि एठी से किछ पचरनी एठी से सीधा पचर चुकल तनु एटा आमो साइड रो हम देउछु ओके सो यू कैन जस्ट स्पेसिफाई द इश्यू ओके एंड द कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट कोन कहिते ओके सेति के लिखले ही सफिशिएंट हो तापर सेमती सेकंड टाइप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओके व्हाट इट मींस इट एटी जेमती से लिखुजे ना डेफिनेशन सो यू कैन राइट इन दैट वे आल्सो ओके सब हेडिंग्स आपण प्रॉपर दे परिबे तो तार इंपैक्ट अधिक रहइबो तो रेलेवेंट प्रोविजंस हला ठीक अछि 15 टू 20 धरंतु ओके को जगह रे आपणकर वेयर विल बी द प्लेस ऑफ स्विंग ओके टेरिटोरियल लोकेशन सो ता भितरु जोड़ा इंपोर्टेंट जेमती 16 और 20 रे देछि और लैंडमार्क केसेस भितरे ओके कुसुम इनगॉट्स वर्सेस एंड अलॉयज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओके जोतरे सुप्रीम कोर्ट कोन कहिसेंदी ना कॉज ऑफ एक्शन इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओके ठीक सेमती पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन राइट एठी आपण जानचंदी कोन एठी से पचारिनी और 10 मिनिट देछि लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो कैन बी रिटन सपोज को लास्ट डे लिखिया पे जाउची कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन छडा जदी अलगा कोनोसी जुरिस्डिक्शन रे एरर रोची ताले नॉर्मल ऑटोमेटिकली ओके आपनकर डिग्रीटा नलिटी हबनी सेटा कोन इरेगुलर एक्सरसाइज आपनकर हबो इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन किंतु सेटा पुन मत देखिवार अछि क्वेश्चन जहा पचारछि ताको जस्टिस कला परे मते समय मिलिबो तो ओके जदी मिलिबो ताले लिख पारि जदी मिलिबोनी ताले मते जति कि पचारछि सेति कि लिखिवार अछि एंसिलरी कि कोलेटरल जिंसो आपण सेतेबेले लिखिबे जेतेबेले सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट बाय यू जो नॉर्मली जेमते क्वेश्चन पड़े सेमिति टाइम प्राइम मिले ओके सो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कौन द रेलेवेंट प्रोविजन दैट यू कैन गिव एंड लैंडमार्क केस ओके सो किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान आपण जदी प्रॉपर्ली टेक्स्ट बुक जो माने पढ़ी थिबे ताले केसेस रो आपण माने ताको तर फैक्ट्स कोन थिला
इश्यूज कौन थिला सेटा एठी लिखिबार नहीं बट आपन को जानिबार अछि फॉर एग्जांपल ए केस धरन किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान केस एटा कौन थिला एतरे बेसिकली कि जदी जणे ओके अंडर वैल्यू करूछ ठीक अछि मु गोटे केस नै कि जाउची जोठी कि एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैटर अछि तार वैल्यू टा एक्चुअली 2 लाख टका किंतु जदी मु सेटा 2 लाख टका रो केस करची जो फोरम टा मते ओके जोटा कि लोएस्ट फोरम जोठी मते केस टा को फाइल करबा कथा मे बी से मत मु जीवा पई चाहनी से फोरम मु गोटे पर्टिकुलर फोरम शॉपिंग जोला कि ओके कोर्ट शॉपिंग जोला कहउछन मु से सेठी की जीवा पई चाहू तो मु मिछरे कहउछ एटा 1000 टका जिंस एक्चुअली सेटा 2 लाख टका मु 1000 टका जिंस कहउछ तो सेटा अंडर वैल्यूएशन हैला ए केस टा तारी ऊपर थिला ओके बट सेटा हमर से लेखिया दरकार नहीं बट यू आर हैविंग टाइम 3 मास आपनकर अछि एटलीस्ट एबे ओके एटलीस्ट एतिकी कर परिबे कि जो केस सुडा मेंशन होची मॉडल आंसर रे ताकू थरे देखि दियो ओके आउ जदि आपन टिके इंडस्ट्रियस अछंती माने दिन को 4-5 घंटा भी पढ़ी देबे खाली केस लो ताले से जो रिसेंट केस लो बॉयटा ओके समर्थ अग्रवाल रो सेटा आनी की तर जो केस हो से तो किछि द लेखि जंदी तर डिटेल्स हरिका केते जगह रे सेटा बहुत क्लियर होनी से मेनली बेसिकली जजमेंट ऊपर ही लिखा है बट इश्यूज और फैक्ट्स हरिका आपण टिके सेटा नेट रे देखि देबे ओके वेरियस साइट्स आर देयर वेयर यू विल गेट द केस समरी ओनली पूरा एंटायर आपण जजमेंट पढ़ा दरकार नहीं तो केस समरी भी देखि देले मोर और लेस आपण आईडिया आसी जिवो ओके तापर ए तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट तापर ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन दैट if you have time you write okay and if you still have time you write about the concept of irregular exercise of jurisdiction okay तो सेटा कोन ऑटोमेटिकली नलिटी आपनकर होबनी यदि इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन हैला ओके बट सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन रे यदि एरर होची ओके ताले सेटा मोर और लेस सेटा नलिटी होबो ए जिंसटा क्लियरली आपन लिखिबार अछि ओके आ गोटे जिंस जोटा कि बहुत जण भी सेटा करथले देखो मॉडल आंसर गोटे परफेक्शनिस्ट आंसर ठीक अछि परफेक्शनिस्ट आंसर माने जे सब एंगल रु से देखि के दोछ ओके सेटा एक्चुअली गोटे प्रैक्टिकल लेवल रे लेखि केबे भी होबन ओके सो मु 100% नॉलेज नै कि गले सेठी 80% एप्लीकेशन करी कि मोर जति के आंसर लिखि एग्जाम पई मोर देन सफिशिएंट ओके सो यू स्टडी द मॉडल आंसर रो टेक्निक्स देखंतु सब इंसो देखंतु बट डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल राइट लाइक इट यू ट्राई टू राइट लाइक इट ओके बट जति न लिखि हो सेतर मन खराब करिवार किछि नै ओके बिकॉज इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल कि ये जेमति लिखु छी कहना 10 मिनिट्स रे आपण जस्ट खाली एटा कॉपी करी कि देखन आपण को हैंडराइटिंग रे यू जस्ट जतले फ्री टाइम थिबो सबल तो आपण पढ नथिबे जस्ट गोटा एक्सपेरिमेंट हिसाब रे एटा 10 मार्क क्वेश्चन पे देछि यू कॉपी इट एटा एतरे प्रिंटेड ये रे आपण को 2 पेज नेलानी माने एक्चुअली आपण को हैंडराइटिंग रे इट विल टेक 3.5 और 4 पेजेस ओके 20 मिनिट रो अधिक नबो एटा लिखिया पे तो हमें कोन टाइम दे परिबे तो 10 मिनिट रे सारीबार अछि एटा हैला तो प्रैक्टिकली ये गोटे लिखिछि कंक्लूजन आपनकर अधा पैराग्राफ मते गोटे 2 लाइन रो कंक्लूजन लिखिबार अछि जदी रिक्वायरमेंट हैला केबे केबे तो टाइम भी मिलोनी कंक्लूजन लिखिया पे किंतु जदी क्वेश्चन रो सबु जिंस जहा से पचारछि सेडा मु एड्रेस कर देछि ताले मते किछि प्रॉब्लम नै आ गोटे जिंस मन रखिबे जेते बेले लंबा क्वेश्चन पड़े तो गोटे गोटे सेंटेंस रो क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर 2 3 3 4 5 रु जे क्वेश्चन रा पड़छि सेठी कोन मल्टीपल जिंस पचारिबो ओके सो आपण भूली जिवे ता भितरे आपण पढी देथिबे क्वेश्चन ता मन रहि जाय छै हां मु जानि छी बट फ्लो रे आपण भूली जिवे तेनो सबु बेले मन रखिबे जो डायरेक्टिव कीवर्ड विल बी अंडरलाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर रे डायरेक्शन ता अंडरलाइन करियो एटी डायरेक्शन हला एक्सप्लेन ओके आउ जो गुडा मेन कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन और मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सेटा को आपण को अंडरलाइन करिवार अछि ओके सो रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट एटी दीटा पार्ट पचारले एटा गोटे आउ गोटे हला हाउ रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडिस डिफर फ्रॉम रेस सबजुडिस एंड एस्टॉपेल माने तीनटा रो डिफरेंशिएशन से पचारला ठीक अछि 15 मार्क देछि से हिसाब रे 7.5 हैला तो रेस जुडिकाटा बिटवीन को डिफेंडेंट तो मु 10 मिनिट जदी लिखि देबी ताले आउ 5 मिनिट रे मते आरो डिफरेंस द पड़ियो जोडा कि असुविधा हो तो
लिखला बेले एटा टिके माइंड रे रखिबे केतेटा पार्ट अछि क्वेश्चन रो आउ केते टाइम देछि माने केते मार्क्स अछि से हिसाब रे मते केते टाइम दबार अछि ओके सो 1 or 2 line introduction it a first pacharla principle of res judicata between co-defendant first go to the relevant provision section 11 cpc ro okay so setere bi 1 or 2 lines apana okay au pura simple language देखियार अछि जेतेबेले आपण प्रिपरेशन करूचंती एतले आपण देखिबे मॉडल आंसर ता यू सी द लैंग्वेज इट इज नॉट इन द टेक्निकल लैंग्वेज ओके बैराक्टर लैंग्वेज रा नहीं एटा आमे जो जनरल लैंग्वेज रे यूज करछु से जत्ते सिंपल लिखिबे मार्क आपण सेते अधिका मिलिबो काहे कि ना दैट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड आपण निजे बुझछन निजे भाषा रे लिखछन बैराक्टर भाषा की मॉडल आंसर रो भाषा को घोषिया बे चेष्टा करियन आपण निज भाषा रे बुझंतु ताकू जा तापर जेमति आपण रिप्रेजेंट करिवे से हिसाब रे मार्क आसीबो लॉ पेपर्स रे ग्रामेटिकल मिस्टेक हेले ओके बेसी किछि असुविधा नाही तो एमति भाबंतु कि हम मोर ग्रामेटिकल मिस्टेक से जीवो स्पेलिंग मिस्टेक से जीवो बहुत जदी हला ताहले गोटे अलगा कथा से भी मार्क खूब कम कटे इंग्लिश पेपर छडा आपण ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक लॉ पेपर रे ओके मु एमति कहबी इट इज ओवरलुक्ड किंतु कांसेप्ट बेसी देखा हुए ठीक अछि तो तापरे से पचारछि डिफरेंस किंबा पॉइंट्स उडा कहछि आपनकर सो सेम मैटर इन इश्यू देखो एटा हला मोस्ट इंपोर्टेंट you have to write in this मु जदी खाली एतिकी एतिकी लिखि देबी ए जो पार्ट उडा मानता एक्सप्लेनेशन उडा ओके तो मते एते मार्क मिलियो काई कहले आपनकर एमती खाता के वर्ड बाय वर्ड पढांते ओके तो if you know people who have corrected OJS copies ओके तांका संगे जेतले आपण कथार्ता करबे फॉर एग्जांपल हमर सर को संगे जदी आपण कथार्ता को जे क्लासरूम स्टूडेंट्स होचंदी ओके मॉर्निंग रिसर्च जे क्लास में होचंदी से बहुत वर्ष होला खाता चेकिंग करतले so just ask him sir you just try to find out what is the mentality of the person who corrects the copy ठीक है does he go line by line no see the but एटा मु जदी लेखि के अंडरलाइन कर देली से जान ले ओके कि जेते जहा रिक्वायरमेंट अछि सबु पिला लेखि राइट ता माने एठी 10टा पॉइंट दिछ हम तो 10टा के लिखबे आरो एक्चुअली 4टा की 5टा पॉइंट लिखि देले भी सफिशिएंट हो सेटा competency of court hela same title necessary issue direct conflict judicial decision opportunity to contest binding effect and if you know point wise or subject wise okay ताहले आपण लैंडमार्क केस भी दे परिबे जति एठी ईश्वर दरदर से कलेक्टर एले ओके लैंड एक्विजिशन कलेक्टर सेटा दे परिबे सेटा राइट बट अगेन आई एज आई टोल्ड यू आपण एमिति ही लिखबे किछ 10टा पॉइंट ये देछि 15 मार्क टोटल माने 15 मिनिट टोटल अछि एतिकी तो लिखला मोर 5 पॉइंट पळेबो हला पॉसिबल नो तो मु 3टा लिखबी 4टा लिखबी जेतिकी मु लिखि परिबी ओके थिंग इज दैट बट यू शुड स्टडी ऑल द 10 पॉइंट्स सेटा बेसी इंपोर्टेंट सेठी सब माने पड़ी जीवन ठीक अछि तो जेतिकी मु पढी छी तो 10टा पॉइंट पढी गली मु 4टा लिखिली सेठी ठीक अछि एग्जाम रिक्वायरमेंट पई सेतिकी दरकार लेट अस से एबे डिफरेंस कथा आपण देखिबे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होते 15टा खंडे कि 10टा खंडे देछि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ओके अच्छा एथि गोटे जिंस देखंतु टू आइटम डिफरेंस आपण जानछन जेते दीटा आपणकर जिंस देखते आपण पचला रेस जुडिकेटा और रेस सब्जेक्ट भितरे डिफरेंस कोन तो आपण गोटे को जणा एमती ताको कॉलम वाइज रिप्रेजेंटेशन रे लेखंते इट्स फाइन किछि असुविधा नै तीनटा जेते देले एमती ताको करि कि लिखला बेले एटा बहुत क्लमजी देखा जो हला एते भलो देखा जीवनी सो एई फॉर्मेट टा फॉलो करिवे जनरली भी आपण टू कॉलम फॉर्मेट न फॉलो करिकि जेते दीटा जिंस रे से पचर डिफरेंस लिखंतु आपण एटा भी फॉलो करि परिबे हला कोन लिखिला फर्स्ट डेफिनेशन माने पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हला डेफिनेशन रेस जुडिकेटा रे कोन रेस सब्जेक्ट रे कोन एस्टोपेल रे कोन हला तो एई पार्ट उडा बहुत इंपोर्टेंट इवन भी जो माने कॉलम्स रे भी डिफरेंशिएशन लिखुचंती जेते देखुतिली खाता उडा तो अपन डायरेक्ट पॉइंट्स लिखुचंती ताटू टिके बेटर मार्क पाया पे फर्स्ट लिखंतु डेफिनेशन तापर हैला पॉइंट नंबर आर फर्स्ट पॉइंट आर सेकंड पॉइंट डेफिनेशन रे कोन डिफरेंस ओके सो डेफिनेशंस गला स्कोप गला लीगल प्रोविजन को सेक्शन रे ओके कोटा आपनकर एनस्ट्राइंड अछि इफेक्ट कोन हबो जंती एठी रेस जुडिकेटा रो इट बार सब्सिक्वेंट सूट्स ऑन द सेम इश्यू रेस सब्जुडिस स्टे सब्सिक्वेंट सूट्स until the pending suit is resolved or estoppel ro prevents a party from contradicting their
previous tense एटी आ गोटे देखंतु एटा फुल स्टेटमेंट्स लेखा होन माने पूरा सेंटेंस तो हम लेखुनु ठीक अछि तो सेटा भी चलिबो काना एटी आपण जस्ट ओके यू आर गिविंग लेट्स से 4 or 5 पॉइंट्स सेतिकी देई हबो ओके एटी सी जेतिकी देछि आपण पढिया पई देछि जानिया पई देछि ओके तापर गला ऑब्जेक्टिव हैला एप्लीकेशन पार्टी इंपैक्ट हाउ डज इट इंपैक्ट द पार्टीज ओके तार नेचर किछटा एग्जांपल्स आउ लैंडमार्क केसेस भी देला तो 10 टी पॉइंट देछि ओके केते मार्क हम डिवाइड करथिलु टोटल क्वेश्चन रो 15 मार्क एटा गोटे पार्ट दीटा पार्ट भीतर माने आरो 7.5 मार्क्स so max you can write 4 or 5 differences okay जदि आपण प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करिवे ठीक अछि तो तेनु if you go through all this 10 then at least 4-5 टा तो आपण लिखि परिवे then जति की दरकार 2 मार्क्स रो कंक्लूजन देखंतु टेस्ट नंबर 1 रे फिगर सुडा किछि देइनी किंतु जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करूछु सब वर्ष रो ओके तो सेथरे जो मु कहितले आपण को स्ट्रक्चर फंक्शन डायग्राम उडा जदि गोटे 15 की 25 मार्क रो क्वेश्चन पडुची you can think of giving a structure function diagram okay so we had a discussion on that कि structure function diagram तो मते कोन पई दबा दरकार मु तो सेही जिंस लेखिली तले पुनी आउथरे मते कोन पई दबार अछि okay so that is what basically you know हमें डिस्कस करथलु मु तो कहितली आपण को तार मेन रिक्वायरमेंट कोन त मेन रिक्वायरमेंट हैला कि आपण okay what you have to do is pictorial माने कि जो डायग्राम टे कले आपनकर लाभटा कोन हबो लाभटा आपनकर ए हबो कि you know that okay आपण जानिया पे पाइबे कि पिलाटा कोन लिखिछि without going through the answer तेनु you are clearly showing the person लोको को क्लियरली देखि दोचंती माने जे इवैल्यूएटर को क्लियरली देखि दोचंती कि मु ओके एया लिखिछि आंसर रे विदाउट गोइंग थ्रू मतलब इट्स लाइक ए प्रेसी ठीक अछि इट ए विजुअल प्रेसी त माने पिला आंसर रे एया लिखिछंती ओके तो इवन इफ ही डज नॉट हैव टाइम से देखिले ए सब दिन सोडा कवर हेछि ताले मार्किंग ता सही हिसाब रे हबो बिकॉज़ प्रेशर जेतले थिबो सेतबेले कोन ना जल्दी जल्दी देखि दियो से टाइप रो कांसेप्ट आसीबो आउ जे पैराग्राफ वाइज पूरा गप बळिया लिखथिबे 3-4 पेज मे बी दे विल नॉट हैव टाइम टू गो थ्रू ओके देखंतु आउ सेटा गोटे दैट इज अ वेरी फाइन कोन आर्ट दैट यू हैव टू स्लोली ओके बिल्ट अप एमती ना कि जीना से डायग्राम कर दो सेमती खाली कांसेप्ट जानले सेटा भी समय लागे सेति पई वी हैव सफिशिएंट टाइम मु प्रथम रो इंट्रोड्यूस करे देउची सो दैट आस्ते आस्ते कॉलेज से जिनसडा आपनकर ओके बाय द टाइम यू गिव द मेंस अपन एटलीस्ट सब क्वेश्चन रे दरकार नहीं किंतु जो क्वेश्चन रे निहाती दरकार जोटा पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन सेतरे ए जो डायग्राम सुडा मेनली पूरा पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन से दिया हुए जोटा एप्लीकेटिव क्वेश्चन जोतरे पडिची आपनकर प्रॉब्लम पडिची सेतरे न देले एटा चलियो ओके द टर्म so now come to the second question CPC the term carries on business for the purpose of section 20 CPC means that person must be physically conducting business at a certain place comment on the above statement in light of judicial policy adopted in this respect okay so ए जो carries on business ठीक है प्लेस ऑफ स्विंग करी कहला द कैरीज ऑन बिजनेस माने से तारो सेठी फिजिकली प्रेजेंट थिबा दरकार ठीक अछि सो इज इट करेक्ट और रॉन्ग ओके व्हाट इज द जुडिशियल पॉलिसी ता ऊपर आपण लिखि परिबे ओके सो फर्स्ट सेक्शन 20 रो आपण स्टार्ट करले अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस ओके सो फर्स्ट आपण प्रोविजन ता दे देबे तार तापरे एनालिसिस ता करिवे सो वी नो दैट फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट मैंडेटरी तो आपण को एजेंट थाई परंती ओके आपण को लेट्स से फॉर एग्जांपल आपण जदी कोन यू नो यू हैव सम एजेंट और आपण को ऑफिस अछि सेठी गोटे वेयर हाउस अछि तो सेटा भी फिजिकल प्रेजेंस हिसाब रे देखाबो आगो को जाई कि हम देखिबा इवन कंप्यूटर्स थ्रू रे जो बिजनेस होछि सपोज आपण गोटे वेबसाइट थ्रू रो बिजनेस करछन ओके आ मु लेट्स से संबलपुर रे आपण को वेबसाइट ता एक्सेस करली आपण को ऑफिस किछि नै संबलपुर रे किंबा टोटली आपण ऑफिस कोठी भी नै किंतु ओके लाइक वी विल सी लेटर जेहेतु मु एक्सेस कली संबलपुर रे सो संबलपुर रे मु केसटा करि परिबि जदि कि छोटा असुविधा हैला इट विल बी थॉट दैट द प्लेस इन व्हिच ओके द वेबसाइट हैज बीन एक्सेस्ड
सेटा भी आपनकर प्लेस ऑफ सुइंग रे जीव सेठी भी कैरीज ऑन बिजनेस टा एप्लीकेबल हबो ठीक अछि सो फिजिकल प्रेजेंस नॉट मैंडेटरी तो ये तापर केस लॉस देछि ता भीतर आपन गोटे एटलीस्ट दबा कथा टू एंड स्ट्रेंथन योर ओके जहाँ भी आपण पॉइंट्स दउछन सो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन कोन फ्लेक्सिबिलिटी इन जुरिस्डिक्शन ओके तो फिजिकल प्रेजेंस टा आपनकर सब बेले रिक्वायरमेंट नाही आपनकर एजेंट की रिप्रेजेंटेटिव थाई परंती किंबा आपनकर रिमोट ऑपरेशन भी थाई पारे जेमति के एई केस रे कोइल वेबसाइट करी करे रिमोट ऑपरेशन ओके सो जुडिशियल पॉलिसी कोन ए जो फिजिकल प्रेजेंस टा मैंडेटरी नो व्हाट इज द जुडिशियल पॉलिसी ensuring access to justice okay then balancing of interests right so recent case laws then जहाँ भी आपनकर इंपोर्टेंट केसेस अछि ओके जेमति के एटी गोट दिटा एग्जांपल देखि मु जोटा कहउतले आपनको वेबसाइट रो दैट इज वासुदेव भोजानी वर्सेस एमके काकारिया the Bombay High Court emphasized that modern business environment necessitates flexible interpretation of carries on witness, including digital and remote business operation. Okay, our website kotha कहली that is India TV Independent News Service versus India Broadcasting Live LLC. Okay, so Delhi High Court held that a company carrying on business through its website accessible in a particular jurisdiction. तमाने मोर केस रे कोन थिला मु संबलपुर रे सेटा एक्सेस करली वेबसाइट टाकू किंतु तारा ऑफिस के एजेंट की केही नांती संबलपुर रे can be considered as carrying on business in that jurisdiction माने संबलपुर रे okay for the purpose of section 20 CPC right so तापर two lines रो relevant conclusion आपण देबे okay सर 2B कंक्लूजन टा जदि मिस करबा मार्क कटियो जनरली कंक्लूजन टा टिके दे दबा कथा माने काहे की इंट्रोडक्शन में तो देले काहे की इंपोर्टेंट एटा आगु को काहे की ओके जेंते एसए रे लिखुचंदी एसए रे की जनरल आंसर रे आपण कोन लिखुचंदी कंक्लूजन रे कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस इश्यू ओके इन द फ्यूचर काहे की एटा ए टाइप रो होबा दरकार ठीक अछि आपण जो आंसर रे देइचन जो पॉइंट्स रे देइचंती ऊपरे काहे की आपण से पॉइंट्स रे देले व्हाट इज द इंपोर्टेंस टिके लैंग्वेज बदली की ओके सेटा कंक्लूजन रे दबार अछि ओडे प्रैग्मेटिक किंबा पॉजिटिव एंडिंग आपण को दबार अछि ओके सब जगह रे न दरकार पड़ी पारे बट टू लाइंस लिखिले चलियो बट आपण जदि समय होनी आपण लिखि पारलेनी किंतु एत्ति की आपण ऑलरेडी लिखि देइछंती तो सेटा दैट सफाइसेस ओके गोटे लॉ पेपर पई सेटा सफाइस करियो ओके तापर 10 मार्क्स आसिला रेट टेबल डिस्ट्रीब्यूशन सर तो जोटी कंक्लूजन माने हेडिंग करी के भी लिखिया पड़िबो कि ना 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 सेटा मो फर्स्ट रे कहली बा आगे सर कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बॉडी तारो हेडिंग केबे भी दिया हुएनी ता एगुडा जो हेडिंग्स उडा ओके एई तीनटारो केबे भी देबेनी एठी तो बॉडी किछि नाही एसे रे जा आपण देखिबे इंग्लिश रे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बॉडी कोठी भी एटा लेखाई जी आपण को बुझाया पे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आ छोड़ा बाकी जो हेडिंग्स लेखाई जी सब दियाबो रेलेवेंट केस लॉज आपण लिखिबे हेडिंग टा ठीक अछि तो जुडिशियल पॉलिसी किंबा आपण आउ जदी कोन बाबू प्रैक्टिकल इंप्लिकेशन एगुडा सब लेखा हो एगुडा हला हेडिंग्स ता अंडर रे जा जा रखुची आको हमें माने से पॉइंट्स रो पार्ट रो ताको सब हेडिंग्स कहू सो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत इंपोर्टेंट सेटा हाइलाइट करूची कि हम सब पॉइंट लिखिछ ओके ताले जदी जणकर माने समय भी नाही कि इंटरेस्ट नाही कि जा भी हो सी सब देखि परिबेनी आपण खाता से हेडिंग सब हेडिंग देखि आ हेडिंग सब हेडिंग प्रोमिनेंट हबो ठीक अछि तो ये एमती लिखिछि फॉर एग्जांपल ठीक है लिखिछि आपण सेमती लिखियार अछि सपोज एटा तो आपण हेडिंग देले नेक्स्ट लाइन रे सब हेडिंग देला नेक्स्ट लाइन रे एक्सप्लेनेशन कला सब हेडिंग एडी लिखिली एडी स्टार्ट कर देली लिखिबा ओके आ जल्दी जल्दी भी लिखुथि से जणा ही पड़िबोनी कोटा कोन तेनु नेक्स्ट लाइन रे लिखिबे ओके आपण कोन लिखुचंदी बहुत इंपोर्टेंट किंतु आखि की केमती देखा जाउती सेटा ताटू भी बेसी इंपोर्टेंट दी जण पिला एग्जैक्टली सेम कंटेंट रे बहुत डिफरेंट मार्क्स पाई परियो 5-6 मार्क रो डिफरेंस आस परियो हला तो सेटा भूली जिबेनी बुझ पाले सो नाउ को जानतु डिस्क्राइब रेट टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो रेट टेबल डिस्ट्रीब्यूशन कोन पूरा सिंपल लैंग्वेज रे सेटा बुझे देबे रेट टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ता कोन राइट सो जत्ते बेले आपनकर ओके गोटे जजमेंट डेप्टर तार एसेट बिकिला परे भी आ मल्टीपल ओके आपनकर लोकंकर क्लेम्स अछि ता ऊपर तार एसेट बिकिला परे भी सेटा नियंट होछि
ठीक अछि ताहले जो तार when the court okay sells his property की जहाँ भी जो पैसा टा आसिला सेटा डिस्ट्रीब्यूट केमती हबो ओके जदि मल्टीपल लोक माने ताको क्लेम करूछन मल्टीपल पार्टीज ताको क्लेम करूछन मल्टीपल डिक्री होल्डर्स आर देयर ठीक अछि तो रेलेवेंट प्रोविजन अपन लिखिबे 73 रो ओके तापर डेफिनेशन देले सिंपल डेफिनेशन देबे तो एटी देखंतु equitable distribution of proceeds of sale of a judgment debtor's assets among multiple decree holders in proportion to their respective claims one line रे पूरा simple okay काहे कि ना पताडा हला मते 10 minutes से सारीबार अछि तो मु multiple points से 4-5 टा point तो निहाती देबी okay purpose कोन why rateable distribution has to be there because fairness को ensure करिवो सेटा provision देले conditions for application this is very important rateable okay distribution केतळे आपण रहबो एटा मल्टीपल डिग्री होल्डर्स थिबा दरकार इनसफिशिएंट एसेट्स थिबा दरकार ते जेति की एसेट्स तार अछि ओके तो से ताको बिकि देले समस्तकर वांट टा समस्तकर डिमांड टा फुलफिल हेई पारुनी ओके समस्त क्लेम टा फुलफिल हेई पारुनी देन साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ओके ता माने कोन डिग्री होल्डर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ देयर डिक्रीज एटा बहुत इंपोर्टेंट टू द सेम कोर्ट बिफोर द रिसीप्ट ऑफ एसेट्स बाय द कोर्ट ठीक अछि ट्रांसफर केस रे भी सेटा हबो ओके दैट इज इंटर कोर्ट ट्रांसफर रे भी एटा एप्लीकेबल हबो जोटा कि परे दिछि से ओके सो एग्जीक्यूशन मस्ट बी बाय द सेम कोर्ट एक्सक्लूजन्स कोन प्रायर सैटिस्फैक्शन और इंटर कोर्ट ट्रांसफर so asset transfer from one court to another for execution purposes are also subject to rateable distribution तर procedure कोन केमिति सेटा करा हबो okay so proceeds collection court will first collect the okay proceeds from the sale of the judgment debtor's asset तापरे से कहारो क्लेम हिसाब रे ताको डिवाइड करिवे ओके तो लैंडमार्क केसेस आपण कोटे आपण दे परिबे वन लैंडमार्क केस तापरे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन काहे की सेटा करावे सो इक्विटी प्रिंसिपल ओके स्पेशली जो माने आपणकर क्रेडिटर्स थांती क्रेडिटर्स मानकर भी ओके कोर्ट हैज टू कोन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट जो माने देइथिबे लोन देइथिबे कि क्रेडिट देइथिबे राइट सो जुडिशियल डिस्क्रिशन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तर क्रेडिटर प्रोटेक्शन जोटा एबे कहली आ एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ओके आपण को एई पॉइंट्स रा जदी लेखुचंती ता भीतर जस्ट जनरल इंग्लिश रे आपण बुझे देबार अछि ओके तापरे टू सी व्हाट इज मेंट बाय गार्डियन एड लाइटम and which order of CPC deals with it 5 मार्क रो क्वेश्चन देछि 5 मिनट्स रे सारीबी ओके जस्ट कल दीटा इनसे लिखा हो व्हाट इज द डेफिनेशन बस एति की लिखा हो इंट्रोडक्शन देठी दबा दरकार नहीं 5 मार्क रे आ तार पर्पस कोन सेटा लिखिबी ओके आउ रेलेवेंट प्रोविजंस लिखिबी बस एति की दर अछि आउ किछ नै से पचाउछि व्हाट इज मेंट बाय गार्डियन एड लाइटम and which order so what is meant I have already written definition दे देली ओके एगुडा आपण काई तले एति की तो मते लेक्चर अछि ये एते लंबा चौड़ा के देछि एटा दिस इज नॉट ओनली केडा 5 मार्क रो क्वेश्चन सपोज 10 मार्क रो क्वेश्चन आसला ता सहित आउ कोन ऐड कला सपोज 15 मार्क रो क्वेश्चन आसला सेतरा आउ कोन ऐड करति की देछि आपण सो गोटे कांसेप्ट जते बेले मु पढुची मॉडल आंसर देखुची मॉडल आंसर कांसेप्ट आपण एंटायर कांसेप्ट बुझौची दैट इज द रीजन ओके सी गोटे पूरा डिटेल सॉल्यूशन दोची बट आपण को डिस्क्रिमिनेट करिवार अछि कि 5 मार्क पई मते केते लिखिवार अछि तो एतिकी ही लिखिबे कोन ना फर्स्ट हला just give the definition no introduction nothing definition a guardian ad litem is a person appointed by court to represent the interest of minor और तापरे आ गोटे इंसो मुसरा टोटली भूली जे कोन कहय भाई अंडरलाइनिंग इज मैंडेटरी एटा हेडिंग और सब हेडिंग तो अंडरलाइन हबो ही हबो एतरे किछि कहबार नै कंटेंट भितरे जोटा इंपोर्टेंट कीवर्ड अछि ताकू आपण निहाती भाबरे अंडरलाइन करिवे ओके so you have to underline those parts a purpose the primary purpose of appointing a guardian ad litem is to ensure that the rights and interests of individuals who are legally incapable to underline of or representing themselves are adequately protected ta na kon ta mo underline karibi jodi apna semti aguru practice karnaanti impact words ठीक अछि impact words किंबा जदि हम इंग्लिश ग्रामर को धरिबा जते हम वर्ब कहउछु action words doing words ओके सेही टाइप रो जो वर्ड रे किंबा जो फ्रेज रे दी तीनटा वर्ड मिसी की ओके इंपैक्ट रा रोच तो एटी डेफिनेशन काहाकू गार्डियन एड लिटम आपण अपॉइंट करचंती काहाकू रिप्रेजेंट करिवो से
interest of minor or of person of unsound mind. Okay, so say guda important, but the rule is 10% rule. 10% rule kona gote खाता gote page ro 10% maximum amar emti underline हे pari. ठीक अछि एमति नै कि मु अंडरलाइनिंग रे सब माने 50% अंडरलाइन हे जाउछ नै सेटा ताले तार लाभ होई किछि होबनी इफ यू स्टार्ट अंडरलाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग मैक्सिमम 10% मैक्सिमम हैला यदि आपण लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 टा वर्ड लिखचंती गोटे पेज रे 10 टी वर्ड ता भितरु अंडरलाइन हेतिबो मैक्सिमम तापर देला रेलेवेंट प्रोविजंस 5 मार्क टा एठी सरी गला आउ मते दरकार नाही ठीक है तो एटा क्री प्रोविजंस एंड ऑल जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग लैंडमार्क केस इट इज दबार नहीं बट यू गो थ्रू इट ओके सो नेक्स्ट तारा प्रैक्टिकल implication भी देछि like protection of interest हला what is the duty and responsibility of the court हला ओके काने कोर्ट को भी देखिया पड़ियो ना कि से जहा को आपण ओके गार्डियन एट लिटम ताको अपॉइंट करा होची ओके सीए सेटा वॉलंटरीली एक्सेप्ट करिया दरकार ताको ने तो जबरदस्ती करा होची कारण जदी जबरदस्ती करा हो काने सी कहा पई लड़िबो ओके गोटे माइनर पई लड़ी पारे गोटे लोक जे कि यू नो मेंटली इनवैलिड अछि ओके ता पई लड़ी पारे तो सी तो किछि जानिबन ना सब जिंस आपको करिया पड़ियो यार जदी इंटरेस्ट नाही और जबरदस्ती आपण ताको से गोटे टाइम रे किछि भी करिबनी ओके एंड पूरा लॉस रे रहि जबो ता पार्टी जाको से रिप्रेजेंट करछि सो तारो वॉलंटरीनेस थिबा निहाती दरकार so it is the responsibility and duty of the court to ensure that okay court has a duty to appoint a competent प्रथमे competence कथा and willing guardian ad litem okay willingness or voluntariness टा बहुत important तापरे procedure कोन what is the procedure जो तो comply करे पड़ियो okay that is provisions of order 32 okay of the CPC right and if you get time 2 lines of conclusion okay so structure ta देखंतु content और structure as per requirement आपण को लिखिबार अछि okay so सेटा आपण को माइंड रे रखिया पे पड़ियो so now you go through it आपण मान पाखे समस्त मोर अछि एटा okay you can go through that app रे देखि दियंतु section A that is CPC रे जदि किछि डाउट अछि you can ask me else we'll take a break for 2 minutes and then we'll start with the second Excuse me, sir. हां कोन सर जेतले आमे केस टा लिखुछु तो मु सर डायरेक्ट तार जजमेंट टा लिखि सर इश्यूज ऑफ फैक्ट्स आर नेसेसरी अछि कि लिखिया पई ना जोठी से पचारिबो कि एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट विथ केस लॉज सेठी लिखिबे इश्यूज फैक्ट्स ओके आपण निजो आडू दोचंदी ना जस्ट खाली क्लियर करिया पे गोटे जिंसो सेठी लिखिया दरकार नहीं से जिंसडा मु फर्स्ट कहली कि आपण जदी हेई परिबो खाली इश्यूज आउ जजमेंट ता दे परिबे ओके सेई दिटा ही लिखिले काना स्ट्रेट जजमेंट देले जिंसडा हला कि कोन सी माने केबे केबे कॉन्टेक्स्ट न आसी पारे ओके किंतु एटी बहुत एग्जांपल्स रे हमें जो एटी देखिलु बहुत एग्जांपल्स रे ओनली जजमेंट हैज बीन साइटेड फॉर एग्जांपल लेट्स से एटी तो से फैक्ट्स और क्या देला किंतु आगो ये रे ओके सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन ने जदी कहि नि आपण किछ दबे एटी दांतु एटी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर एंड ब्रदर्स ओके कोल सेल्स लिमिटेड एटी जस्ट कली तार डिसीजन ता देला गोटे ही जजमेंट रो गोटे ही ताको समराइज कला गोटे लाइन रे सुप्रीम कोर्ट upheld the principle that rateable distribution ensures fairness among multiple degree holders fine काहेना 80 से क्वेश्चन थिला rateable distribution कोन तो आपन 10 मार्क पकेतिला से कोडी भी कहनी मते कि केस लॉस दियंतु कि कोन so it is fine it is acceptable ठीक है तो किछ असुविधा नहीं it depends on the marks of the but जो क्वेश्चन रे स्पेसिफिकली पचाउची कि केस लॉस देई कि सेटा बुझांतु सेटी it is better to give okay facts and issues as well okay सेटा आपण माइंड रे रखिबे रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन कोन पचारछि आ आपण से हिसाब रे तार आंसर ता लिखिबार अछि फाइन किछि डाउट नहीं now you come to CRPC how and when a magistrate can set aside an ex parte order passed while exercising powers under
section 126 of CRPC. ठीक है. So again 1 or 2 lines रो गोटे केना देखंतु आपण जदी इंट्रोडक्शन न देबे ओके से 126 CRPC कथा कहला आपण जहा विषय रिलेटेड अच्छी सेक्शन तार गोटे बेसिक डेफिनेशन दे देबे तापरे प्रोसीजर माने रेलेवेंट प्रोविजन को आसे बहुत जण कोन करंती सीधा लिखिबे 126 CRPC deals with air. Okay, so it is लिखला 126 CRPC deals with procedure for hearing maintenance applications under section 125 CRPC which provides for maintenance of wife, children and parents. Okay, it is important. Eta likhila pare then you go directly to the provisions. Okay, 126 1 2 3 okay 1 and 2 सेटा आपण दे दे परले. Okay, तो ते कोन सिटी requirement आउ कोन provisions अछि ता विषय रे आपण क्लियर लिखिले. Specifies the procedure for conducting proceedings under section 125 CRPC including the place where proceedings may be initiated. Okay, tapare 126(2) allows for ex parte orders if the respondent fails to appear despite due service. Okay, tapare 126(2) again also provides that magistrate may set aside an ex parte order for good cause shown within 3 months from date of order. तो एठी कोन एठी तापरे आपन को एनालिसिस रे गुड कॉज टाको बलरे बुझिया पे पड़ियो. ठीक अछि. सो तापरे से कोन कहि दीटा पार्ट क्वेश्चन रो पचारछि तो अंडरलाइन सेटा करिवे हाउ एंड व्हेन. ठीक अछि. दीटा माने केतो बळे से करि परिबे आउ केमिति करि माने प्रोसेस टा. ओके, सो दीटा ऊपर आपन फोकस हबार अछि. तो आपन दे नाउ कमिंग टू हाउ इट कैन बी डन. Conditions and procedure for setting aside ex parte order. So filing an application, the application the requirement कौन. Okay, so say sufficient cause show करिवा दरकार कि मु काहे कि present हे परलेनी hearing बेले. Okay, then the timeline, right? So 3 months भितर आपण को फाइल करिवार अछि. Okay, order रो 3 months भितर. एटा हला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रे गुड कॉज. You have to prove. Okay, आपण गुड कॉज टा प्रूफ करार अछि. तो गुड कॉज भितर कोन कोन जिवो. Okay, the application must demonstrate good cause for the absence. Number 1, illness. तो good cause भितर आउ भी अधिका हे पारे. Okay, that is the discretion of the court. Lack of proper notice or other compelling reasons. Okay, generally illness or lack of proper notice or other okay compelling reasons which will be decided by the court itself. ठीक अछि. तो discretion, judicial discretion आपण को रोच. Then notice and hearing. तणु notice दिया हबो. Okay, आउ तापरे hearing हबो. Hearing हेला परे if the magistrate is satisfied with the reasons provided, order will be passed setting aside the ex parte order. The case will be reheard on its merit. Okay, reject जदि करा हैला जहा grounds देथिले सेटा एते sufficient मिललानी, then the application will be rejected and ex parte order will stand. Okay, दी तीनटा केस देछि आपण गोटे लिखि परिबे मोहम्मद यामीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ओके, और रिसेंट केस भीतर भी आपण ओके एनीवन यू कैन टेक लैंडमार्क केसेस रो द बट बेटर रिसेंट केस रो जिंस हला आपण को टिके यू नो यू हैव टू वर्क फॉर दैट. ओके, काना सेटा जनरली जोडा टेक्स्ट बुक्स अछि पब्लिश टेक्स्ट बुक्स से माने बहुत रिसेंट तो दियंती नहीं से माने लैंडमार्क केसेस रो दियंती. तो बहुत रिसेंट भाई जेंति कि से बुक रे देखि कि आपण कोनोसी ऑनलाइन डायरेक्टरी रे ताकू खोजिया पे पड़िबो ताले आपण पर्टिकुलर पॉइंट्स रो पाई परिबो. ओके, लेट्स से 2020 2021 2022 रो केस लॉस उडा लैंडमार्क केसेस उडा. ओके, से गुडा जनरली आपनकर पब्लिश्ड आउ अथॉरिटेटिव जोटा हम कहू ना टेक्स्ट करिका तो सेतरे जनरली एते जल्दी आसेनी सेडा ताको रिवाइज करिया में बहुत टाइम लाग जाय. किंतु हमकु जदी रिसेंट जिंस दबार अछि ताले दिस मेथड you can follow. Okay, tapare outline the cardinal provisions of CRPC at the time of commencement of proceedings before magistrates that uphold the virtue of fair trial. Okay, dita din se कहला CRPC रे under रे cardinal provisions कोन at the time of commencement of proceedings जेतबे proceedings start होछ. Okay, before magistrates that uphold the virtue of fair trial. एंती बहुत provisions मिलिबो. 15 मार्क रो देछि तो एठी गोटे मु भाबी की डायग्राम करि परिबी. ओके, यू गो थ्रू दैट यू नो जो डेली आंसर राइटिंग हम पढु तो सेतरे जो
structure और function ର diagram सुरा हमें देखुचु ओके से diagram सुरा इठी गोटे जदि देबे ताले भलो राइट सो अगेन टू लाइन इंट्रोडक्शन तापरे फेयर ट्रायल को केमिति को सेक्शन अपहोल्ड करूची केमिति अपहोल्ड करूची ओके 207 हैला 208 हैला ओके so 207 रो स्टार्ट करंतु सप्लाई टू द अक्यूज्ड a copy of the police report and other documents 208 209 228 और 300 से तला ठीक अछि ए क्वेश्चन टा दी तीन थरो रिपीट हेछि ओके ओपीएससी रे दी तीन थरो एटा रिपीट हेछि इन one way or the other okay so key points supporting fair trial commencement and documentation the first commencement stage re kon hoba supply of police report and documents supply of statements and documents in session cases okay 207 208 tapare second stage by stage dela tapare framing and commitment okay so commitment to sessions code 209 framing of charges 228 fairness and equity so double jeopardy 300 okay right to legal representation 303 right to speedy trial okay एटा गोटे क्वेश्चन पडिची आ एटा हमर you know we were discussing in the last class previous year question right to speedy trial in itself okay बहुत गुडे सेतरे प्रोविजन्स अछि जेतरे right to speedy trial implicitly or explicitly has been given ठीक अछि although एटा एमिति directly mention हेनी okay आ 21 okay constitution रा article 21 under रे भी right to speedy trial सेटा भी गोटे सुप्रीम कोर्ट को गोटे फंडामेंटल राइट हिसाब रे भी मानिछन ओके राइट टू ए स्पीडी ट्रायल राइट तबरे लैंडमार्क केसेस भितरे एनी वन और टू यू कैन गिव मेनका गांधी एटा आपण दे परिबे ओके हुशिनारा खातून दिस टू आर बाकी उडा भी इंपोर्टेंट अछि ओके एनी वन और टू केसेस सफिशिएंट बट द थिंग इज दैट एटा केते मार्क रो 15 मार्क रो तो हमर फिगर गोटे हेले भलो ओके सो बट एटी स्ट्रक्चर ता देखंतु से केमिति लेखुची कि फेयर ट्रायल रो ओके डिफरेंट फेजेस पई कमेंसमेंट बेले ओके एंड इवन लेटर डिफरेंट फेजेस रे केमिति कोर्ट एंश्योर करूचंती फेयर ट्रायल ओके एज पर प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी राइट स्ट्रक्चर ता वंस आपण इंटरनलाइज कर देले आपण को लेखिबाटा सहज हो देखो जो माने टिके कम मार्क पांती मेंस रे किबा दि तीन थरा देइचंती ओ मेंस मार्क कमिची तांकर नॉलेज बेस रे किछि प्रॉब्लम नै से पूरा मुखस्त कर दे नो दैट द थिंग इज दैट द रिप्रेजेंटेशन दा मे बी से पूरा बही रे जेंति लेखा हिची से माने सेमति लेखुचन ओके सेते पेशेंस और सेते समय आपन को इवैल्यूएटर को पाखरे नथिबो कम टू क्वेश्चन 4 कैन ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एग्जामिन एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी immediately after recording the statement of an eyewitness तो सेटा में जानछु 313 अंडर रे से ओके जत्ते बेले भी सेटा एग्जामिन करि परिबे ओके so give one or two lines introduction and then relevant provision section 313 CRPC की अपन आसीबे ओके and 313 रो different components okay 3131A 3131B just write in very simple and short okay sentences so in every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain the circumstances appearing in evidence against him the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court considers necessary okay now 3131B re the court shall after the witness for the prosecution has been examined and before the accused is called for his defense question him generally on the case of the purpose of enabling him to explain any circumstances appearing in evidence against him okay witness gote kon koi gala se tapare taku directly pachar peribe to make clear certain thing witness ei tinta jinso कहले actually kon heitila court wants to be clear okay to seta bhi kari hobo question kon pacharchi okay question pacharchi immediately after recording statement of an eyewitness to seta second case se gala ethare okay the court shall after witness for the prosecution has been examined and before the accused is called for his defense question him generally on the case for the purpose of enabling him to explain any circumstances appearing in the evidence against him okay tapare se jaha pacharchi eta bahut important se jo jinchota pacharchi exactly seita apankara subheading haba darkar okay so timing of examination right so joda ame dekhilu 3131B okay the primary purpose of section 3131B CRPC is to give accused an opportunity to explain any circumstances appearing in evidence against him
after the prosecution has presented its case. This means that the examination typically occurs after the prosecution has completed presenting all its evidence. तापर discretion of the court जो भी time रे जते कहीं ना 3131A रे कहैछि any stage of the trial. Okay, so court डाकी ताकू पचारि परिबे, right? However, such an examination is not mandatorily immediately after recording the statement of an eyewitness under 3131A. Mandatory no, unless the court considers it necessary to seek clarification on specific points. Okay, so our objective, what is the purpose of this? The examination under 313 is designed to provide the accused a fair chance to respond to the evidence presented to him. It ensures that the accused is aware of all incriminating evidence and has an opportunity to explain or rebut it. Okay, so these are the landmark cases. Any one you can write. Tinta kebe bhi likhi hobani, dita bhi likhiya darkar nahi. Any one you choose and you can write. Okay. Then sequential examination. The sequential examination of accused ensures that they are fully aware of all the evidence presented by prosecution and can respond comprehensively. Random way rehele to see bhi jani pariboni, confused he jibo. Okay, au taku jo fair chance ta miliba kotha nijoku defend kariya pai seta no mili pare. Okay, so that is very important for the fair trial, right? So eta puta comprehensive taro. Okay, this is basically 10 marks per question. So se sabu aspects tara cover korchi. Ta bhitru amaku important parts guda joda ki se exactly question na pacharchi, you can write that. Okay, tapare next asantu eta bhi repetition question, eta both thara repeat heichi. Anticipatory bail, principles of anticipatory bail. Anticipatory bail is a device to secure the individual's liberty. It is neither a passport to the commission of crime nor a shield against any and all kinds of accusations, likely or unlikely. Gurbakh Singh Shiba versus State of Punjab. Okay, 1980 case. Amplify the above statement. So it out a directive amplify. Amplify मैंने कहा अपन जो loudspeaker amplifier use करते हैं. मैंने कोटे इंस्टेड ऑफ कोई जी तक को आउरी बड़ा करी के देखा, आउरी explain करो. Okay, तक को आउरी बढ़ाओ. Right. The above statement and discuss the principles. So the times amplification means you discuss more issues, more factors related to this. Multi-dimensional माने तरा सबू dimension उड़ा discuss करो. And discuss the principles laid down in the above case. Okay, so तापाई you should know this particular case. It is a landmark case, anticipatory bail को नहीं की. Okay, regarding grant or refusal of anticipatory bail. So what is anticipatory bail? Gotte line re lekhibe introduction re amplification of the statement. Hela se koi na amplify this. So setime ame amplification of the statement heading de delu. So device to secure liberty. Okay, so what is the main aim of the anticipatory bail? Anticipatory bail is intended to protect individuals from undue harassment and wrongful detention by allowing them to approach the court for bail in anticipation of an arrest. Simple definition kiba explanation apna dele. It serves as a safeguard for personal liberty, ensuring that individuals are not deprived of their freedom without due process. It is very important. Okay, tapare it is not a passport to crime. So mu dekhe dele anticipatory bail pai. Okay, tapare jodi court mate grant kar dele bail, tapare mu jaiki auri kono crime commit karibi, kimba witness ku doribi, kimba influence karibi apanଙ୍କର. Okay, ja bhi witnesses ho ki apano ja evidence prosecution collect korchi ta upare. So it is not a passport to crime. Okay, then not a shield against all accusations. The बहुत ही serious charges mo upare lagichi. Au irrefutable evidence hosi, CCTV footage hosi, eyewitness 5-6 अछन. तो सेठी प्रश्न ही उठुनिया मते anticipatory bail मिलिबार. It is not a shield against all accusations, especially if it is okay बहुत ही गोटे vicious crime गोटे हिची. Okay, ताले से सबु cases रे it is certainly not a shield against all accusations. Okay, तो से particular case रा merit को देखिगी court decide करिवे. तो next part, तो ए part टा मोर complete है गला. से first part जो देथिला कि amplify the above statement. Okay, दीटा जिनस कोई थिला statement रे कोन, it is neither a passport to commission of crime ताको मु बुझेली, it nor a shield against any or all kind of accusation, likely or unlikely ताको बुझेली. दीटा जको part मु बुझे देछि. तो मोर question जहाँ पहुँचला वो काम सरला. The second part रे पहुँचला कोन, ये जो case टा देछि सेतरे कोन कोन provisions है. Okay,
So in that particular case, principles regarding grant and refusal of anticipatory bail, judicial discretion, case by case basis, but a generic simply, kariyabani, case by case basis about nature and gravity of the offense. If the offense it has serious impact on the society, okay, heinous crime gote heichi to seti to chance nahi, likelihood of misuse jodi aku anticipatory bail diya higala ye jaiki witness ye jodi kichi power re achi accused, okay, ye jaiki jodi witness को influence कला कि किसी investigation रे program करेला तो ताले ताकू generally anticipatory bail दिया बने अपन देखी जाती even ए last 6 मास भीतर chief ministers मानु को भी दिया हेनी bail, okay, बहुत पर दिया ला, ठीक है जी, okay, सेटा तो regular bail को तो anticipatory bail भी it is like likelihood of misuse अच्छी कि नहीं, credibility of the accusation, antecedents of the applicant, okay, जदि से कौन गोटे serial offender थिबो सबबेले सेही टाइप रो काम ही करछि, okay, so cooperation with investigation करूछि कि नहीं, and what is the case prima facie, माने on the face of it what it looks, okay, the case is very serious, the chance नहीं anticipatory bail दबार, okay, एटी बहुत गुडे points देछि and mostly you have to write all of these कहीं ना एही गुडा थिला से जो particular case रे जो प्रिंसिपल्स गुडा आपनकर कोर्ट देथे, राइट, तपर से लैंडमार्क केसेस देछि एठी लैंडमार्क केसेस आउ लिखिया दरकार नहीं, मु तो सेही केस ऊपर ही से ही पचाची गोटे केस ऊपर, सो एठी लैंडमार्क केसेस दरकार नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज यू कैन गो थ्रू दिस, ओके, कहना से पर्टिकुलर केस ऊपर ही पचाची. नेक्स्ट कम टू एविडेंस, तो एथले सेक्शन बी रे जदी किछि डाउट अछि ताले पचरंतु, ओके, मु देखुछि गोटे जिंस को जणो मेसेज करचंदी कि कॉल भी करचंदी कि आमे लिखि परनु से टाइप रो, फर्स्ट कहूछि ओके कैविया गोटे दे दोछि मॉडल आंसर बढिया लिखिया पई आपण ताकू देखंतु ता स्ट्रक्चर टा आपण से स्ट्रक्चर हिसाब रे लिखिया पे चेष्टा करंतु, कंटेंट ऑफ द मॉडल आंसर कैन नॉट बी माने ताकू सेमिति लिखि ही होबनी, और तापर मते भी मो निजरो किछ ऐड करिवार अछि, ओके, निजरो माने जदि आपण देखुछन ना कि जिंस मिस करिछ, मॉडल आंसर इज नॉट सैक्रोसेंट, ओके, होली काउ नो सेटा कि सेतरे एक्जाक्टली आमे सेमती लिखिया गोटे डायग्राम आमे ऐड कर परिबा, ओके, आमे जति कि समय रे आम स्पीड जति कि अछि जति कि पचाउछि ता भितर लिखिबार अछि, सेटा भी टिके माइंड रे रखंतु, यू रीड द मॉडल आंसर देखंतु दी टाइप रो आपण माने एबे जो माने प्रिपरेशन करछथि प्री क्वालिफाई करछथि दी टाइप रो पिला अछन, जणे जो माने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अछन आपण इधर कंप्लीट कोर्स आपनकर सरी जाइछि आपण आगुरु दैछथि मेंस केतर, ओके, तो आपण माने स्ट्रेट आरंभ करिवे टेस्ट सीरीज को, आपण को किछि जे बेसिक्स कोन करिया कथा न करिया कथा सेटा टेस्ट दो दो आपनकर सेटा इवॉल्व हो आस्ते आस्ते, आउ जो माने आपनकर प्री क्वालिफाई हे गला बट यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट मेंस सब दिन से पढ़ना तले आपण माने कोन करिवे टेक 3 स्टेप्स, से तीनटा स्टेप जदि आपण नउचंती ताहले मोर और लेस 95% यू विल बी रेडी. फर्स्ट कथा हला आपण जदि माने निजरो नोट फोट बनि ना दि पर्यंत एबे से धंदारे मोटे पसंद नहीं, से समय भी नहीं, रेडीमेड नोट्स जो मिलुची मार्केट रे कि ऑनलाइन 1000 प्रकार नोट्स मिलुची ऑनलाइन भलो क्वालिटी रो नोट्स ताकू फॉलो करंतु, बिकॉज़ नाउ यू कैन नॉट मेक योर नोट्स पैराट पढंतु ताकू एबे नोट मेकिंग रे टाइम नष्ट करंतु, रादर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके पूरा सॉल्व करो. ओपीएससी वेबसाइट रे 2012 रु 2022 पर्यंत 11 वर्ष रो आपनकर देछि, राइट, आ आपण जदि बाहरु किणुचंदी तो सी तो बहुत आगुरु देछि, ता पैटर्न से तो टी अलगा थला, एनीवे जे हम